Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is a topic of organ transplantation rejection, and here is some questions related to this topic. Firstly, first question is why the graft is rejected, and the second question is what are the key cell types behind the graft rejection, and the third question is what are the clinical stages of rejection. And firstly, what is graft? And here is a definition of graft. A graft actually is the transplantation. A graft is actually transplantation of an organ or tissues to a different locations with the goal of replacing a missing or damaged organ or tissues. ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन हम जो और ग्राफ्ट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होती है ऑर्गन या टिश्यूज़ की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर. हमारा गोल क्या होता है उसको रिप्लेस कर देना, जो मिसिंग या फिर डैमेज ऑर्गन या टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस करना होता है. ग्राफ्ट आर टिपिकली मूव्ड विदाउट देयर अटैचमेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मस्ट रीएस्टैब्लिश दीज इन एडिशन टू अदर कनेक्शंस एंड इंटरकनेक्शंस विद their new surrounding tissues. And here is the types of grafting. Firstly, as xenograft, allograft, isograft, and autograft. And the sequence is firstly as autograft, secondly as isograft, and thirdly as allograft, and fourthly as xenograft. And we will discuss it one by one. And firstly as autograft, it is a graft from self to self, or isograft is it is a transplantation from identical to twin to twin, but autograft transplantation from self to self, and isograft transplantation from identical twin to twin. And the third one is allograft. It is a transplantation from relative or known relatives to individual. Is clear? ऑटोग्राफ्ट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होती है सेल्फ टू सेल्फ, मतलब अपने ही अंदर आप उसको आप जो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर. आइसोग्राफ्ट होते हैं वो आइडेंटिकल टू ट्विंस होते हैं, उनके अंदर हम ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं. एलोग्राफ्ट का होता है रिलेटिव से नॉन रिलेटिव इंडिविजुअल्स के अंदर हम एलोग्राफ्ट जो है ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं. द फोर्थ वन इज जीनोग्राफ्ट. इट्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, not from humans to humans, it's from animals to humans. It's a transplantation from animals to humans. And here is a booklet of this topic, namely as organ transplantation rejection. And here is the content of this topic, and it's a subject of advanced immunology and organ transplantation rejection. It's a topic organ transplantation rejection, and here is the contents of this topic organ transplantation rejection. Firstly as its introduction, secondly as firstly as, and the second is types of transplantation, and next one is next content is mechanism of transplantation, and then next content is graft versus host diseases, and fourth content is transplantation rejection, and the fifth content is medication and infections, and next content is immunosuppressive drug organ rejection symptoms. Firstly, what is organ transplantation rejection? Here is the introduction of this topic. Actually, transplantation is the process of moving cells, tissues, or organs from one side to another, either within the same person or between a donor and a recipient. If an organ system fails or become damaged as a consequence of disease or injury, it can be replaced with a healthy organ or tissues from a donor. ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल्स को मूव करवाते हैं, सेल्स हो गए टिश्यूज ऑर्गन्स को मूव करवाते हैं वन साइड टू अनदर, हुआ वो पर्सन के अंदर हो या डिफरेंट, या जो भी आप सेम पर्सन हो सकता है, डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जो रेसिपिएंट या डोनर जो है वो दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं. ये तब मुमकिन होता है जब आपके ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं करते. ये तब हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं इफ़ एन ऑर्गन फेल्स और बिकम्स डैमेज. अगर या तो आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो फेल हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, उन या फिर किसी चीज़ में डिजीज़ की वजह से इंजरी हो जाए, देन हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी ऑर्गन और टिश्यू से. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज
Organ transplantation is a major operation and is only offered when all other treatments options have failed. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा मेजर ऑपरेशन होता है जब ये तब अप्लाई किया जाता है तब जब तमाम अदर ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास फेल हो जाएं. अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर फेल हो जाते हैं देन हम ट्रांसप्लांटेशन को ही सिलेक्ट करते हैं. Here is some types of organ transplantation rejection, and the first type is autograft. Autograft, I have already discussed it. Autograft is a transplantation of cells, tissues, or organ between sites within the same individuals. That is skin graft. And transplantation of cells, tissues, or organs between the sites within the same individuals, that is skin graft. And here is the diagram of skin graft. As you can see the graft of skin graft, here is the grafting and here is the burn sites. अगर आपके कुछ साइट्स जो हैं वो बर्न हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं वहाँ से. जैसे कि हेयर इज़ अ figure 1 and here is a figure 2. Here is a healing after grafting and here is a rejection of grafting. There is a two possibilities. One possibility is the acceptance and other possibilities is the rejection. ज़रूरी नहीं कि ग्राफ्टिंग के बाद वो चीज़ एक्सेप्ट कर जाए, ग्राफ्टिंग के बाद रिजेक्शन भी हो सकती है. So two possibilities. There are two possibilities: acceptance and rejection. And the third diagram, here is the third diagram: transplantation of cells within the same body, transplantation of cells or tissues or organ within the same body, like heart cells, heart tissues. And here the fourth diagrams, which is relevant to the autograft transplantation. As you can see in this diagram, here is it is transplantation within the same body. As you can see, यहाँ पर जो है वो आपके जो हैं वो सेल्स टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यूज़ ले जाते हैं आपके इस वाले बॉडी पार्ट से, फुट से ले जाते हैं और आपके आर्म के जो आपका हैंड उसके अंदर जो है वो उसको इंसर्ट किया जाता है. सो ट्रांसप्लांटेशन जो है विद इन द सेम बॉडी ही यहाँ पर जो है वो की जा रही है. एंड हेयर इज़ द सेकेंड टाइप, आइसोग्राफ्ट. Isograft is a transplantation in which organ or tissues are transplanted from a donor to a genetically identical recipient, such as an identical twins. As you can see in the diagram of figure of 1.5, it is also known as isotransplants. हम आइसोग्राफ्ट को आइसो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि ये आइडेंटिकल रेसिपिएंट और के दरमियान ही होता है. डोनर जो होता है वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए जिसकी वजह से जो है ये ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हो सकती है. एंड द थर्ड टाइप इज़ एलोग्राफ्ट. And the allograft is a transplantation of organs of tissues from a donor to non-genetically identical individuals of the same species. आपकी स्पीशीज सेम होगी बट आपके जो है और जो आइडेंटिकली जो नॉन जेनेटिकली इंडिविजुअल्स के दरमियान ये ग्राफ्टिंग होगी एलोग्राफ्ट. आप सेम स्पीशीज सेम होगी बट सेम पर्सनस नहीं होंगे. सो एलोग्राफ्ट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. As you can see, here is a one person, here is a second person, but both species are the same. जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन हमसे की करके इस पर्सन से सेल टिश्यूज जो है वो ली जा रही है और इस पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं. And the next fourth type is xenograft. Xenograft is transplantation from animals to humans. And here is a transplant of organs or tissues from one species to another species. And here is the best example is a porcupine heart wall transplant, which is quite common and successful. As you can see in this diagram, figure 1.7 फिगर के अंदर आप ये देख सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ऑर्गन की हो रही है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस के अंदर. मंकी से जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो लिए जाते हैं एंड ह्यूमंस के अंदर जो है से ट्रांसप्लांट करवाया जाता है. So here is the types, and now we will discuss about the types of tissues and organ graft and their complications. Here is firstly on the left side, here is the graft type. On the middle side, here is a procedure, and on the right side, here is some complications related to graft types. Firstly is autograft. It's a procedure from self to self and complications no rejection concern. अगर ऑटोग्राफ्ट है मतलब सेल्फ टू सेल्फ होता है, कंसर्न आपका नहीं होता रिजेक्शन होंगे, बॉडी सेम है, सब चीज़ सेल टिश्यूज ऑर्गन सब कुछ सेम होंगे,
सो आपके जो है वो रिजेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे ही नहीं, क्योंकि सेम बॉडी होने की वजह से, सेम पर्सन होने की वजह से आपकी बॉडी खुद के अंदर, आपकी बॉडी से ही ली जा रहे हैं, सो इसके अंदर रिजेक्शन के कंसर्न नहीं होते. सो नेक्स्ट आइसोग्राफ्ट, इट्स ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन टू ट्विन, लिटिल कंसर्न कि थोड़ा बहुत ट्विन्स में फ़र्क आ जाता है, सो लिटिल कंसर्न्स ऑफ रिजेक्शन. एंड द थर्ड इज एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट इट्स अ इट्स अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम रिलेटिव टू और नॉन रिलेटिव टू इंडिविजुअल्स. ये आपके रिश्तेदारों के अंदर भी हो सकता है या फिर रिश्तेदार से हट के भी हम इसे ले सकते हैं. सो इसके अंदर रिजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि समटाइम अगर हम रिश्तेदारों से लेते हैं तो तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजेक्शन की. अगर हम रिलेटिव से नहीं ले रहे हैं देन तो पॉसिबिलिटी होगी ही होगी. And the last type is xenograft. And xenograft is a transplantation from animals to humans. So it is too much. Here is a much possibility of rejection. रिजेक्शन जो है वो पॉसिबल होगा और पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन की ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी मुश्किल होती है. सो इसमें रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है. So here is some mechanism of rejection. Firstly, as graft rejection occurs when the recipient immune system attack the donated graft and begins destroying the transplanted tissues or organs. And here is a graft rejection occurs when the recipient immune system attack the donated graft and begins destroying the transplanted tissues or organs. ग्राफ्ट रिजेक्शन तब होती है जब रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है डोनेटेड ग्राफ्ट को और डिस्ट्रॉय करना चाहता है उसके ट्रांसप्लांट टिश्यूज और ऑर्गन्स को. मतलब जो रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर देता है डोनेटेड ग्राफ्ट को और फिर डिस्ट्रॉय करेगा ट्रांसप्लांट टिश्यूज और ऑर्गन्स को. So the immune response is usually triggered by the presence of the donor own unique set of HLA proteins, which the recipient immune system will identify as foreign. And here is a question, what is HLA? HLA human leukocyte antigen. सो द इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो यूजुअली ट्रिगर करता है बाय द रिस्पॉन्स प्रेजेंस ऑफ डोनर ऑन यूनिक सेट ऑफ HLA प्रोटीन. मतलब इससे किसकी मदद से होता है, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन की मदद से क्या करता है, उसको प्रेजेंस करता है, उसके अपने ही ट्रिगर करेगा, विच इज़ द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम विल आइडेंटिफाई एज फॉरेन. So the degree of similarity between the HLA genes of the donor and the recipient is known as a histocompatibility. What is a histocompatibility? And what is it's a degree of similarity between the HLA protein, human leukocyte antigen genes of the donor and the recipient. It's known as a histocompatibility. And the more genetically compatible the donor and the recipient, the more tolerant and the recipient immune system should be the graft. जितने अच्छे कंपैटिबल होंगे डोनर एंड रेसिपिएंट, जेनेटिकली कंपैटिबल होंगे, उतना ही टॉलरेंट वो कर सकते हैं रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम होता है ग्राफ्टिंग को. So, however, unless the donor and recipient are genetically identical, that is, as in identical twins, there will always be some degree of rejection. And as well as non-self HLA proteins, other surfaces proteins on a donor can also be identified as a foreign antigen and elicit an immune responses. And here is some graft rejection. It is divided into two types: graft versus host rejection and transplant rejection. The graft versus host disease is further divided into two types: acute GVHD. GVHD is a graft versus host diseases, and chronic GVHD, chronic graft versus host diseases. And on the right side, transplantation rejection is further divided into three types. So firstly as hyperacute rejection, and secondly as acute rejection, and the third one is chronic rejection. And we will discuss it one by one. And firstly, as here is a graft versus host diseases on the left side, and on the right side here is a diagram of transplant rejection. And firstly, as a graft versus host diseases, when bone marrow is transplanted transplanted, the T cells in the transplant attack the recipient tissues. When the bone is transplanted, the T cells in the transplant attack the recipient tissues. And on the right side, when the kidney is transplanted, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट टिश्यूज में क्या चीज़ हो रही है, बोन मैरो को जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर व्हेन अ किडनी इज ट्रांसप्लांट, द रेसिपिएंट टी सेल्स अटैक द ट्रांसप्लांट.
यहाँ पर जो है टी सेल जो है वो ट्रांसप्लांट है, वो अटैक करते हैं रेसिपिएंट टिश्यूज के ऊपर, और यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेड किडनी ट्रांसप्लांटेड द रेसिपिएंट टी सेल्स अटैक द ट्रांसप्लांट। ओके, ट्रांसप्लांट जो है वो अटैक करता है रेसिपिएंट टिश्यूज के ऊपर, बट इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो रेसिपिएंट टी सेल्स है वो अटैक करते हैं ट्रांसप्लांट के ऊपर। क्लियर? And here is the ABO blood incompatible. Sometimes ABO blood incompatibility भी मेजर वजह बनती है इसके ग्राफ्ट की रिजेक्शन की। सो ग्राफ्ट जो है रिजेक्ट हो सकता है। सो ABO refers to blood group which can vary between individuals. Like most transplant types, matching of blood groups between donor and the recipient is a key strategy in reducing rejection risk. However, blood group compatibility is not always required for the transplantation. For example, in the case of very young children with an immature immune system, ABO blood system incompatible transplant can be carried out with less risk of transplant rejection. Now here is some graft versus host diseases. A graft versus host disease is caused by the rejection of grafted mature T cells in the bone marrow in column with the alloantigens of the host. Like here is some two types, acute GVHD and the chronic GVHD. Acute GVHD characterized by the epithelial cells and death in the skins, GI tract and liver. Gastrointestinal tract, GI, gastrointestinal tract and liver. And the chronic GVHD, chronic graft versus host diseases, is characterized by the fibrosis of one or more these organs as well as the lungs. So here is a transplantation rejection. Here is a three types. Firstly as hyperacute rejection, and the secondly as acute rejection, and thirdly as chronic rejection. And firstly here is a diagram of hyperacute rejection in the figure 4.1. As you can see in this diagram, hyperacute rejection, here is the endothelial cells lost the cell surface, heparin sulfate proteoglycans that normally interact with the endothrombin third to inhibit coagulations. As you can see in this diagram, here is the endothelial cells and here the blood vessels. And as you can see in this diagram, complement activation, endothelial cells damage, inflammation and thrombosis can be occur. And here is acute rejection. Parenchyma cells damage, intestinal inflammation. यहाँ पर जो है वो एंडोथीलियल सेल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के अंदर। एक्यूट रिजेक्शन के अंदर जो है वो पेरेंकाइमा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इंटरस्टेशल्स जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि ये नॉर्मल है, और यहाँ पर जो है वो एंडो जो इन्फ्लेमेशन जो होगी वो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. एंड द क्रोनिक रिजेक्शन, chronic inflammatory reaction in vessels walls and in smooth muscles and proliferation vessels occlusions. So यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल्स में प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है. सो थ्री टाइप्स में जो है वो डिफरेंट किस्म के केसेस हैं. किसी में पेरेंकाइमा सेल्स डैमेज होते हैं, किसी में एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं, कहीं पे इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो ब्लड वेसल्स वॉल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पर प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है. सो here is second last topic point, which is medications and infections, immunosuppressive drugs. Organ transplantation surgery can save and improve the quality of your life. After you have organ transplant, you will need to take medications for the rest of your life to keep your body from rejecting your new organ. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो है वो आपकी लाइफ को सेव करती है. जब आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो अगर अपनी बॉडी को जो है वो कंफर्ट देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हैं, तो मेडिकेशन लाजमी यूज़ करें. द इम्यूनोसप्रेसेंट हाउएवर मेक यू मोर लाइकली टू डेवलप इन्फेक्शंस कैन इंटरफेयर विद हाउ यू कैन टेक योर इम्यूनोसप्रेसेंट. So here is the last point, organ rejection symptoms. What are the symptoms? So organ rejection symptoms vary by type of organ transplant you have had. It's
उसके सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं किस तरह के अपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाया है. इफ़ यू एक्सरसाइज experience fever, pain or other signs of illness, contact the transplant center right away. अगर आपको बुखार हो, आपको दर्द हो या इलनेस हो तो आप लाजमी अपने ट्रांसप्लांट सेंटर से कैसे आप कॉन्टैक्ट करें. द फर्स्ट स्टेप वी विल गिव यू मेडिसिन टू काउंटर द रिजेक्शन. आपको सबसे पहले जो स्टेप आपको मेडिसिन दिया था कि वो उस रिजेक्शन को हम देख सकें, उसे कंट्रोल कर सकें. Organ rejection often require a biopsy and a hospital stay along with a test and monitoring. अगर आपको biopsy करवानी पड़े, hospital stay करना पड़े, test करवाने पड़े, monitoring करवानी पड़े तो आप लाजमी करवाएं ताकि आपको इस चीज़ से clear हो जाए. So certain types of rejection may require more tense or lengthy treatments. कुछ टाइप ऐसी भी होती है rejection की जिसमें आपको टाइम काफ़ी लग जाता है उसके ट्रीटमेंट को उसको ट्रीट करवाने के लिए. So here is some references of this topic. And here is a thank you and now thank you and Allah Hafiz.